input multiply by input. Substitute the value of rs in this equation. We get 1 upon st plus 1 into 1 upon s square. हमने इसे अरेंज किया, that is 1 upon s square st plus 1. अब इसे सॉल्व करने के लिए या इसका लाप्लास इनवर्स लाप्लास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना होगा cs पर. पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के लिए हम इसके डिनोमिनेटर हर को दो जितने भी इसके वैल्यूज होती है, डिग्रीज होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको काटते हैं. जैसे कि s पर a upon s square plus b upon s plus c upon st plus 1. ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें इसकी वैल्यू चाहिए a b और c की वैल्यू चाहिए. a b और c की वैल्यू प्राप्त करने के बाद हम उनकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसकी वैल्यूज निकालेंगे. यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर ये वैल्यू हमें मिली है क्योंकि दोनों साइड्स के अंदर उनका हर डिनोमिनेटर जो है सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमें मिला 1 plus a s plus 1 plus b multiplied by s ब्रैकेट में sp plus 1 plus cs square. Now by equating the constant a b c, that is the constant, by equating the constant terms on both the sides get a equals to 1. That means जो वैल्यूज हम a की पुट करेंगे वो दोनों साइड की इक्वेशन को क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए. Substitute a equals to 1 and equating the coefficient of the s term on both the sides. तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया 1 minus 1 to 0 equals to t plus b. हमें यहाँ पर t plus b मिलेगा तो b equals to minus t. अब b की वैल्यू हमें मिली है, ठीक है, a की वैल्यू को पुट करने पर b की वैल्यू हमें मिली है. अब b की वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, c का वैल्यू मिलेगा. Now substitute the value of a equals to 1, b equals to minus t and c equals to t square in partial fraction expression in cs. Both all values of constant a equals to 1, b equals to minus t and c equals to t square. Put all three constant values in the equation of cs, that is 1 upon s square, that means a equals to 1 minus t upon s, that is b equals to t, plus c square upon st plus 1, that is c equals to t square. After solve this equation we get cs equals to 1 upon s square plus t upon s plus t upon s plus 1 upon t. Now at this stage we have to apply the inverse Laplace transformation of both the sides of this equation. So we get cs, the inverse Laplace ct equals to 1 upon s square, the inverse Laplace t small t minus t upon s, the inverse Laplace is t, 1 upon s equals to 1. T is the constant, so not included in the inverse Laplace, plus t the constant, and 1 upon s plus 1 upon t is the inverse Laplace of e to the power minus t upon t ut. Now the unit ramp response ct has both the transient and steady state terms. So the transient term in the unit ramp response is ctr transient t equals to t into e to the power minus t upon capital T. The steady state terms in the unit ramp response is cs t equals small t minus t ut, and the error is t equals to input minus output. After put the value of input and output, we get the final terms of error, that is capital T minus capital T into e to the power minus small t upon capital T. ये जो ग्राफ है ये t 2t 3t 4t